In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum to everyone and very good morning to all of my dear students. I hope that you all are in good health and you all had a nice weekend. Well, students, I'm your teacher of subject English. My name is Humaira. So let's start today's lecture. Let me tell you first of all, day and date. So today is 14th of December 2020 and today is Monday. Okay, the day is Monday and date is 14th. Okay, so let's move ahead to see the topic of today's lecture. And dear student, the topic of today's lecture is application of sick leave. Means today we are going to do application. We'll see the pattern of the application, how we are going to write the pattern, actually what is important to write on the application, and the subject of the application is sick leave. Okay, means bimari ki application. Here you go, you can see here. Actually, students, if you remember, I have already told you the pattern of the letter writing, which is actually comprises on the formal or informal. Okay, so when we are going to write the application, so we have to like aware that we are writing to application to some company, to some school work, or for any urgent piece of work. Okay, so we have to follow the pattern. You can see here, first of all, it's written to. We'll start from the to the principal. You can see to the initial letter of to, and the initial letter and the principal initial letter is कैपिटल. ठीक है, इन तीनों का आपने कैपिटल और अपर केस में लिखना है. आफ्टर इट यू हैव टू पुट कोमा टू द प्रिंसिपल, and then you have to write down your school name and then comma. Your school name, you are studying in Unique Junior School, so you have to write here Unique Junior School, comma. And in the last line you have to write school place name, where it is situated. ठीक है, so you will where your school built on, so आप लिखेंगे इधर Westwood campus TNB. Okay, Lahore. So dear students, please make sure that you are writing the accurate pattern which I am telling you to follow, because most of the students forgot to put the commas and especially the full stops as well. Okay, so you just need to follow it, how we are writing the principal. The first letter of the principal must be in uppercase. ठीक है, capital होगा. Next is that subject. There is a colon. एप्लीकेशन फॉर अ सिक लीव. सब्जेक्ट मीन्स कि हम एप्लीकेशन किस चीज़ की लिख रहे हैं. ठीक है, तो उसमें आपने सब्जेक्ट लिख देना है. एप्लीकेशन फॉर अ सिक लीव. मोस्टली ऐसे होता है कि इफ़ यू सी योर ग्रामर बुक पेज नंबर 12, तो समटाइम्स ऐसे होता है कि वी आर नॉट बाउंड टू राइट द सब्जेक्ट. ओके, वी जस्ट सिंपली स्टार्ट इट. क्या हमने टू द एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल लिखा है, डियर मैडम से स्टार्ट कर दिया. ठीक है, समटाइम्स हम लोग ऐसे करते हैं, लाइक इफ़ यू आर राइटिंग द सब्जेक्ट और नॉट, इट्स नॉट कंपल्सरी, बट इफ़ यू राइट द सब्जेक्ट स्पेसिफिकली, सो इट वुड बी गुड फॉर यू. कि अगर आप स्पेसिफिकली सब्जेक्ट का नेम देते हैं, अदरवाइज आप इसको लिखें ना लिखें, डजेंट मैटर. ओके, well, and then you have to write here sir or madam, and then you must put the comma. Okay, sir or madam, whatever you want to write here. And then there would be the body part of the application. ठीक है, उसके बाद आपने सर मैडम के बाद कोमा डाल के ये जो 3 लाइन्स हैं, इधर आपने बॉडी पार्ट लिखनी है एप्लीकेशन की, जो आपने सब्जेक्ट दिया था. ठीक है, नेक्स्ट, जब आपने पूरी की पूरी एप्लीकेशन लिख ली, व्हेन यू फिनिश द टॉपिक ऑफ द व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन, उसके बारे में लिख दिया इन द लोअर लाइन्स. लाइक आपको एंडिंग कैसे करनी है, योर्स फेथफुली स्टूडेंट. इट्स नॉट मस्ट टू राइट स्टूडेंट हियर, बट इसके बाद आपको कोमा डालना है. ठीक है, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, कोमा. ठीक है, faithfully, you can put obediently instead of faithfully as well. You can put truly instead of faithfully or obediently as well. ठीक है, after it you have to write name, class, roll number and date. Okay,
नेम में मीन्स इफ़ यू आर राइटिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, सो अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, सो यू कैन राइट हियर XYZ, बट यू आर इफ़ यू आर राइटिंग लाइक अगर आप रियल में लिख कर कोई वाकई में कोई तकलीफ़ की एप्लीकेशन लिख रहे हैं विच यू नीड टू शो इट टू मैम, तो आपको फिर यहाँ पे अपना ओरिजिनली नेम लिखना पड़ेगा। इफ़ यू आर राइटिंग इट फॉर इन योर एग्जामिनेशन इन योर पेपर, तो फिर आप पेपर में XYZ लिख सकते हैं। बट अगर आप वाकई में किसी कंपनी को या किसी स्कूल में या किसी को लिख रहे हैं एप्लीकेशन, तो फिर आपको यू हैव टू पुट योर ओरिजिनल योर रियल नेम। ओके, आपको अपना रियल नेम लिखना पड़ेगा, क्लास लिखनी पड़ेगी, रोल नंबर लिखना पड़ेगा, डेट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। So the pattern which I just tell you, how you have to take the starting and how you have to end up the application, it's very compulsory, it's very like if you write it properly, so you will get definitely 3 marks of it. Okay, the rest of the mark depend on the body part of it. Okay, so here you go. If you come to the page number 12 of your grammar book, so there is a application which is sick leave application. The principal and then there is a comma, unique junior school. Now you can see here unique, U is capital, junior J is capital, school S is capital, and then there is a comma, Lahore, full stop, and then in the next line you have to write here madam or sir, ठीक है, फिर आपने कोमा डालना है। Now there is a body part। अब बॉडी पार्ट पे आपने क्या लिखना है, इट इज़ स्टेटेड, ये बयान किया गया है, डैट आई एम इल, कि मैं बीमार हूँ, कोमा आई एम इल, कोमा, ठीक है। कोमा मीन्स दैट वी डिड नॉट फिनिश द सेंटेंस हियर। इफ़ वी पुट द फुल स्टॉप, सो इट मीन दैट वी हैव एंड अप द स्टेटमेंट। लेकिन कोमा मीन्स कि अभी हमें और बताना है इस सेंटेंस में कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। इट इज़ स्टेटेड दैट आई एम इल, कोमा, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकती हूँ या आ सकता हूँ, फुल स्टॉप। ओके, नाउ योर सेंटेंस इज फिनिश्ड। ओके, नेक्स्ट इज़ द काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, मेहरबानी करके मुझे 1 दिन की छुट्टी दे दें, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, ठीक है। एक्चुअली in this 1.5 line, the it's related to the sick leave, but we are talking very to the point, ठीक है। हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की, वी जस्ट टेल द रीज़न दैट वाई यू नीड टू गेट ऑफ, कि आपको ऑफ क्यों लेना है। और उसके बाद देखें, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार होंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, देयर इज़ वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट if we put will, so it would be okay with it, because अभी थोड़ी इंग्लिश की ग्रामेटिकली देखें तो विल और शेल को हम थोड़ा सा इस तरह से बोलते हैं आयल। सो तो थोड़ा सा चेंज हो गया है कि अगर बट बिकॉज इट्स बिन रिटन ऑन योर बुक, सो इट्स बेस्ट कि आप इसी को फॉलो करें। अदरवाइज अगर आप आयल, जैसे हम बात करते हुए कहते हैं कि आई बी देयर, आई डू दैट, तो उसमें हम शैल नहीं यूज़ करें, वी आर यूजिंग विल एक्चुअली, ठीक है। तो विल इज़ यानी कि विल को ज़्यादा अब यूज़ किया जाता है। तो आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, सो इट्स बेटर इफ़ यू राइट द सेम स्टेटमेंट एज इट्स गिवन ऑन योर ग्रामर बुक, ठीक है। एंड देन फुल स्टॉप, फिनिश द सेंटेंस, योर्स ओबीडियंटली, comma XYZ dated. Okay, that's all for today's lecture. Homework is that you have to learn the application and then write application on your notebook. Okay, give the first of all write the date and then give the topic of the application, then start the application. Okay, I hope that you enjoyed your lecture. Take care of yourself, make sure that you are writing in your neat writing on your notebooks. Okay, take care of yourself. Allah Hafiz.